A lot of beginners, while choosing their first tech stack, has this same big question whether to start with app development or with web development. I started my development journey with app development, specifically Android, made a bunch of apps, learned a lot of things. Then I shifted to web development. App development and web development are two very lucrative as well as demanding skills. Both require extensive knowledge and dedication to learn and build, but building an app and creating a website are two completely different things. Hi, मैं विप्र है और आज हम कंपेयर करने वाले हैं ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट को from the point of view of an absolute beginner on the basis of 6 to 7 major points. Now, before starting, I want to say that by beginner, I mean that you should know at least some basic level of coding. It doesn't mean that आपको while loop, for loop ही नहीं आता और आप app development करने बैठ गए. And second thing is, let's say I say that app development is a better choice for a beginner. ऐसा नहीं कि web development एकदम खराब हो गया. Both have their pros and cons, and we will discuss it today. The first point is beginner friendly. I think that web development is little bit more beginner friendly than app development. Firstly, तो आपको HTML, CSS, JavaScript ये सभी सीखना पड़ेगा, and that is mostly taught in school itself. On the other hand, in app development, you need to learn a lot of things. Actually, setting up of the environment is difficult in itself. Android Studio जो होता है Android के लिए वो भी बहुत थोड़ा overwhelming होता है, and it will require a lot of effort सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में, एंड थोड़ा जो बेसिक फंक्शनलिटीज, ऐसा नहीं कि स्टैटिक जो ऐप्स होते हैं उनका कुछ वैल्यू नहीं होता है, तो आप अगर थोड़ा भी फंक्शनलिटी ऐड करना चाहते हो अपने ऐप्स में, दैट विल रिक्वायर अ बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज एंड हार्ड वर्क. सो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिगिनर, web development is much beginner friendly. Now the next point is hardware requirements. Web development में ऐसा कुछ बैरियर है नहीं कि आपको अच्छा कुछ लैपटॉप या फिर कंप्यूटर आपको ज़रूरत है. यू कैन स्टार्ट विद एनीथिंग. जो भी लैपटॉप में बेसिक वेबसाइट चलता है उससे आप स्टार्ट कर सकते हो, बट इफ़ यू गो विद ऐप डेवलपमेंट, अच्छा एक लैपटॉप होना काइंड ऑफ बिकम्स अ नेसेसिटी. First thing, if you want to run your emulator on your laptop, then it requires even more RAM. So 8 GB of RAM is a bare minimum necessity, and then if you have 16 GB, that is better. And if you now go for iOS development, फिर तो आपको Mac लेना ज़रूरी हो जाएगा, which is not possible for every beginner. So from that point as well, वेब डेवलपमेंट इज़ अ वेरी इजी थिंग फॉर बिगिनर. और आपको ज़्यादा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन स्टार्ट विथ whatever you have right now, you can start with that. Now the next point is choice of technologies. Here I think app development is a better choice because app development doesn't give you much choices. I think a lot of choices is not that good for a beginner. It can become a little bit tricky कि कौन सा यूज़ करे कौन सा नहीं करे. ऐप डेवलपमेंट अगर आप iOS में करते हो तो स्विफ्ट में करो, या फिर अगर आप एंड्रॉयड कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर कोटलिन. जावा भी यूज़ नहीं होता है, बट ऑब्वियसली नोइंग जावा कैन हेल्प. सो देयर आर नॉट a lot of choices, but on the other hand in web development you will have to make a lot of choices. Firstly तो आपको फ्रंट एंड में कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करें, एंगुलर, व्यू, रिएक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट आपको चॉइस करना पड़ेगा कौन सा फ्रेमवर्क आप यूज़ करेंगे. बैक एंड में जावा स्प्रिंग बोर्ड यूज़ कर सकते हो, या फिर जो नोड जेएस होता है वो यूज़ करते हो, या फिर पाइथन का जब होता है जैंगो वो भी यूज़ कर सकते हो. सो देयर आर लॉट ऑफ चॉइसेस. फिर डेटाबेसेस में भी चॉइस होता है. सो अ लॉट ऑफ चॉइसेस आर देयर इन वेब डेवलपमेंट विच इज़ a bit tricky for a beginner. So from that thing, app development can be a better skill to pick. Now the next thing is competitors. A lot of people actually go with web development, and so there is a lot more competition in web development. A lot of people are making web apps. On the other hand, Android and iOS में आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे. iOS पे तो बहुत ही कम लोग मिलेंगे. So the competition there is much less. So you can decide on that basis कि आपको एंड्रॉयड लेना है या फिर iOS लेना है या फिर वेब डेवलपमेंट करना है. Now the next thing is lucrative. I think both app development and web development are very much lucrative in today's market. अगर आप छोटे मोटे ऐप्स बनाएंगे तो फिर कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं, बट अगर आप अच्छे खासे ऐप्स बना लेंगे या फिर वेबसाइट्स बना लेंगे तो ज़रूर डिमांडिंग होगा. बट one thing I would like to add here that
if you can make small websites, static ones, then also you can get some freelancing projects, but in that case you will not get. In case of app development, non-functioning apps do not have any meaning. So in app development you need to get to a decent level, then only you can make money out of it. Web development में ऐसा नहीं है, you can go by your level and you can still get jobs, but obviously if you go to a higher level, if you make very good functioning websites, then obviously you will get paid a lot more. Now the next thing is deployment. Here I think app development deploying is a little bit hard, not a little bit, actually is very hard for a beginner, because you need to go to Play Store, then give some money, then you can deploy with, and that process is also not very easy. अगर iOS कर रहे हो तो आपको for each app you need to give some amount of money to Play Store to App Store. वेब में ऐसा है नहीं, अब इजीली अपना कोई भी वेब बहुत ही इजीली फ्री में आप होस्ट कर सकते हो, और आप वर्चुअल में कर सकते हो, AWS में कर सकते हो, या फिर GitHub पेजेस में भी कर सकते हो, बट फॉर एप्स यू नीड टू पे सम मनी, एंड इवन इट इज़ नॉट दैट शेयरेबल. आप अगर डिप्लॉय नहीं करोगे तो शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि नो वन वांट्स टू डाउनलोड एन APK फाइल फॉर सिक्योरिटी रीजंस. आप एंड्रॉयड में तो फिर भी APK शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों या फिर अपने परिवारों से शेयर कर सकते हो, बट अगर आप iOS ऐप्स बना रहे हो तो iOS ऐप्स कैन ओनली बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऐप स्टोर इटसेल्फ, सो आप शेयर भी नहीं कर सकते. So that becomes a bit of a problem, which is why that is a big barrier for a beginner to start with app development. Web development में ऐसा कुछ है नहीं, आप you can easily deploy your apps on any of the free options and you are good to go. So finally I want to say that neither of the technologies is either very good or very bad. Both have their pros and cons. But from a point of view of a beginner, I think starting with web development is a much better option. Firstly, ऐसा कुछ है नहीं कि आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर लिए तो आपको वही करना पड़ेगा. यू कैन ऑब्वियसली स्विच आफ्टर 1 or 2 years. एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो so you will be learning a lot of things which will be used in app development as well, like databases, backend managing, APIs and all. So those things are similar in app development. और अगर आप React चूज़ कर रहे हो तो आप फिर React नेटिव में भी एप्स बना सकते हो, which is a cross platform technology to make apps, so that becomes a lot more easier. So ऐसा नहीं कि आप एकदम ही पीछे हट रहे हो कि आप कभी स्विच नहीं कर सकते हो, but for starting out I think web development is a much better choice rather than app development. It gives you a lot of barrier. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, then you can also check this video. In this video I have pointed out how to start programming from absolute scratch and get to a decent level within a short period of time.